प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये एक ऐसा वर्ड है जो इनहेरिटेंस मतलब होता है हमें किसी से मिला हुआ, किससे मिलेगा, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलेगा। वेरिएशन मतलब जो कि एक दूसरे से वैरी करता है, यानी जो अलग अलग हो। अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी के कर्ली हेयर है, किसी के स्ट्रेट है, ब्लैक ब्राउन, डिफरेंस करता है ना, ये वैरी करता है। तो ये सब हमारे जीन्स में होता है और इसको हम टर्म देते हैं जेनेटिक्स, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से और पेरेंट्स को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आता है। बट वेयर डिड दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम? सो दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम ग्रेगर जॉन मेंडल, हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पे for 7 years to understand the pattern of inheritance and variation। इन्होंने अलग अलग पी प्लांट के ब्रीड लिए, फ्रेश, ओल्ड, और फिर इसको ब्रीड करके उन्होंने इस पर स्टडी किया और वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा इन्होंने। देन व्हाट ही गॉट मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस which obtain the ratio 3:1 and 9:3:3:1 respectively। And based on all these studies, then he proposed a law which was Mendel's law of inheritance। और इस इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 अलग अलग लॉज मेंडल ने दिए थे। नेक्स्ट कम्स द पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ऑल पॉसिबल जेनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। लाइक जेनोटाइप एंड फेनोटाइप आपको इस चैप्टर में बहुत बार सुनने के लिए मिलेगा। जेनोटाइप क्या है? जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हम इनहेरिटेंस, यानी जो उनके बॉडी के अंदर के फीचर्स है उनके बारे में बात करते हैं। वेयरएज फेनोटाइप इज द आउट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। आउट ऑफ फिजिकल फीचर्स इन द सेंस कि वो बाहर से कैसा दिखता है, उसका आई कलर, उसका हेयर कलर, स्किन कलर। Then he gave us the idea about incomplete dominance. Now, incomplete dominance is something when traits are not expressed completely, which is 1:2:1. For example, when we cross a white flower and a red flower, we get pink. It's neither nor white nor red, it's pink. So it's in between, it is not expressed completely. Whereas codominance is something that when two alleles express themselves independently. For example, blood group in humans. Multiple allelism is when more than 2 alleles governing the factor of ABO blood group। टेस्ट क्रॉस। तो जब हम किसी डोमिनेंट फेनोटाइप को, फेनोटाइप आई मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं जो डोमिनेंट हैं, ठीक है, किसी रेसेसिव से हम उसको ब्रीड करवाते हैं तब उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। प्लियोट्रॉपी तब देखने को मिलता है जब एक सिंगल जीन एग्जिबिट करता है मल्टीपल फेनोटाइप एक्सप्रेशन में। लाइक एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है जो कि इन्फ्लुएंस होता है एक ही जीन से, और ये मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करता है। अब ये इनहेरिटेड होता है और ये एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये ट्रेट कंट्रोल होता है 3 और मोर जीन से। इसका एक इजी एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। दीज पर्टिकुलर ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी जीन्स। इट्स अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस और ये एनवायरमेंटल फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। सो हाइट, वेट, बॉडी बहुत मैटर करता है। ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा कि एनवायरमेंट से हमारे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हमारे आउटर लुक्स पे। नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ दीज जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी 1902। दिस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज गिवन बाय थॉमस मॉर्गन। Now, what did this Morgan do? He carried out several experiments on Drosophila to explain the linkage and recombination. I would suggest you to just search about it. This Drosophila experiment was very interesting, you know. And then it comes to linkage. Linkage is a physical association of 2 genes on a chromosome. This means that when 2 alleles on the same chromosome will move to each other, it's known as linkage. Now, recombination explains the generation of non-parental gene, like if it's not related to your parents, but it does appear in you. So it obviously came from somewhere. That's what recombination gene is all about. Alfred Stuyvesant, this person constructed the first genetic map. The first ever genetic map was constructed by him only of a chromosome using a frequency of recombination. An important detail to note. Sex determination is the establishment of sex, the individual, whether a male, the female, or division of different development in an individual at the time of zygote formation. Now, this happens when the zygote is formed. There are various types of sex determination mechanism observed in various organisms.
Now we know that in humans we determine as XXXY. Okay. There are also certain things that are observed in insects. In insects it's XXXO. In female birds it is ZZZW, and in human it's XXXY type. Now mutation, it's a sudden inheritable change. Like mutation can be sometimes very good. Like for example, your parents are having black eye color and suddenly the baby has its blue color. Now it's very good mutation, but at the same time mutation is very bad. Why I told bad? That because mutations sometimes come with disabilities or dysfunction in the body which can lead to several disease, और कह सकते हैं कोई बीमारी हो सकती है. Now, pedigree analysis is very fun thing to do. I would suggest you to practice it because this always comes in exam or in even your NEET exam. Here you have to analyze that what disease can transfer into what generation. If your practice is very good, you can do that. So this is the analysis of traits in several generation of the family in the form of family tree diagram. Now, genetic disorders in human beings associate with inheritance of change, which is altered genes or chromosome. Okay, what happens that determined by gene alteration or mutation, some disease may occur in the body. That's what it's all about. Disorder means only that the genes are not arranged in proper manner. So obviously disease is mandatory here. Here we comes towards the end of the quick review. Thanks for watching. Bye bye.